अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम माविश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल माविश टीचर्स। आज की वीडियो मैं उर्दू में रिकॉर्ड करने वाली हूँ और इसके बाद आपसे जो भी एक्सरसाइज नोट्स शेयर किए जाएंगे उनकी वीडियो उर्दू में ही होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड एक्सरसाइज नोट्स, जिनमें हम देखेंगे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो के तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देती चलूं कि जैसे मैं आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताऊंगी उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि लेटर ऑन आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट वन, इन विच ऑफ ट्रांसमिशन मोड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट साइमल्टेनियसली? सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड और हाई स्पीड मोड? सो द करेक्ट आंसर इज half duplex mode. Second one, in which of the following network every computer can act as client, server or both at the same time? Client-server network, peer-to-peer network, point-to-point network or local area network? The correct answer is peer-to-peer network. Third one, which of the following network provides central security? Client-server network, peer-to-peer network, point-to-point network or local area network? And the correct answer is client-server network. Fourth one, which of the following computer shares resources on a network for others to use? Desktop computer, client, server or microcomputer? The correct answer is server, option C. Fifth, which of the following topology is most expensive to implement? Star, bus, ring or mesh? The correct answer is option D, mesh topology. Number 6, in which of the following network topology switch is used? Star, bus, ring or mesh? The correct answer is option A, star topology. Number 7, which of the following network is used to provide cable TV and internet services? Local area network, wide area network, metropolitan area network or point-to-point network? The correct option is option C, metropolitan area network. Number 8, which of the following provides high-speed internet connection? Dial-up connection, DSL connection, ISDN connection or CDMA connection? The correct answer is option B, DSL connection. 9, which of the following network connects computers across cities, countries and continents? Local area network, wide area network, metropolitan area network or client server network? Its correct option is option B, that is wide area network. Number 10, which of the following network topology uses a device called terminator? Ring topology, mesh topology, bus topology or star topology? So the correct answer is bus topology. जी, अब आप लोग इनके आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, एंड द लास्ट वन। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डिस्क्राइब एनी 3 डिफिकल्टीज अ कंपनी मे फेस इन रनिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो इसके आंसर में आप लिखेंगे, फॉलोइंग आर द डिफिकल्टीज अ कंपनी मे फेस इन रनिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट वन, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, नो हार्डवेयर शेयरिंग। Company will have to buy a separate hardware device for each computer because it will not be possible to share hardware devices, for example hard disk, printer, and scanner, etc. Second heading will be no software sharing. Company will have to install required application software on each computer because software sharing will not be possible in case of no network. और थर्ड और लास्ट हेडिंग आपकी बनेगी, नो फाइल शेयरिंग। In absence of computing network, company employees will not be able to see and receive files and view other people's work. Take a screenshot of this answer. Now we have second question. What is meant by डेटा ट्रांसमिशन? सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इट कंसिस्ट ऑफ सेंडर, रिसीवर एंड द मीडियम, guided media or unguided media, which carries the information. There are 3 modes of data transmission, which are simplex, half duplex and full duplex. And that's it for question number 2. Take a screenshot. Third question, differentiate between half duplex and full duplex transmission modes. जिनके डिफरेंशिएट करने का कहा गया है, इसलिए आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है। एक साइड पर आपकी हेडिंग देनी है हाफ डुप्लेक्स और दूसरी साइड पर फुल डुप्लेक्स, और हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते जाएंगे। फर्स्ट हेडिंग आपके पास आ जाएगी डेटा ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट साइमल्टेनियसली। Full duplex is used to transmit data in both directions simultaneously. A sender can send as well as receive the data but not at the same time, and in full duplex, a sender can send and receive data at the same time. In half duplex provides slow data transmission as compared to full duplex mode, whereas full duplex provides fast data transmission as compared to half duplex mode. फिर आपकी हेडिंग देनी है एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज वॉकी-टॉकी, ATM, computers and text message. Full duplex के लिए एग्जाम्पल्स हैं टेलीफोन कॉल, computers connected in a network, and audio and video calls. That's it for question number 3. Take a screenshot. Now we have question number 4. Define network architecture. सबसे पहले आपने नेटवर्क आर्किटेक्चर की हेडिंग डालनी है ताकि हम उसको डिफाइन कर सकें। नेटवर्क आर्किटेक्चर refers to the layout of network that consists of computers, communication devices, software, wired or wireless transmission of data, and connectivity between components. There are 3 types of network architecture. Client-server network architecture, which is centrally secured network. Second one is peer-to-peer network architecture, which is not centrally secured network. And third and the last one is point-to-point network architecture, which is long-distance network. That's it for question number 4. Question number 5. Differentiate between a server and a client computer. So again differentiate करने का कहा गया है. So you have to draw a table और हम उसमें दोनों चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 by 1 कंपेयर करेंगे। एक साइड पर आप हेडिंग देंगे सर्वर और उसी के ऑपोजिट साइड पर आप हेडिंग देंगे क्लाइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा अबाउट डेफिनेशन। A computer that shares resources for other users to use on a network is known as server, whereas
A computer that accesses the resources shared by server is known as client. Second point, number of users supported. Server supports more users to log in at a time, whereas client supports a single user to log in at a time. Third point, power. A server is a powerful computer, whereas a client is a simple and less powerful computer. Fourth point, price. Server is an expensive computer, whereas a client is a cheap computer. Fifth point, performance. Performance of server is high, whereas performance of client is low. Sixth point, examples. Examples of server are database servers, file servers, and web servers, etc. Examples of clients are laptops, smartphones, etc. That's it for question number 5. Take a screenshot. Question number 6. Compare LAN and WAN. अगेन आपने एक टेबल को ड्रॉ कर लेना है. एक साइड पर हेडिंग डालनी है LAN और दूसरी साइड पर WAN. फर्स्ट पॉइंट, LAN stands for local area network, whereas WAN stands for wide area network. Second point, range. LAN can connect computers within a building, whereas WAN can connect computers across cities, countries, continents, and even worldwide. Third point, speed. Data transmission speed is fast in LAN, whereas data transmission speed is slow in WAN. Fourth point, data communication problems. Data communication problems in LAN rarely occur, whereas in WAN, data communication problems often occur. Fifth point, bandwidth. High bandwidth is available for transmission in LAN, whereas in WAN, low bandwidth is available for transmission. Sixth point, example. A network in a school lab and a network in small office are examples of LAN, whereas internet and network connecting bank computers across the country or worldwide is an example of WAN. That's it for question number 6. Take a screenshot. Question number 7. Why star topology is more reliable than bus or ring topologies? Answer इसका आ जाएगा. Due to following reasons, star topology is more reliable than bus or ring topologies. Number 1. It provides fast communication between computers. Number 2. Easy to connect new devices to the network. Number 3. Easy to detect and fix faults. Number 4. Failure of one computer does not stop functioning of the entire network. That's it for question number 7. Question number 8. Mention any 3 problems which may occur if peer-to-peer network is used for a large number of users in an organization. Heading डालेंगे सबसे पहले Problems of peer-to-peer networks. First heading आपके पास बन जाएगी या first problem आपके पास आ जाएगा difficult to control and manage. Peer-to-peer network is difficult to control and manage. Second point, allows maximum 10 computers to connect. Peer-to-peer networks are suitable for a small number of users ranging between 2 to 10 computers. Large peer-to-peer networks become difficult to manage. Third point, no centralized security. It does not provide centralized security. No single person is assigned to administer the resources of network. Individual users have complete control over the resources of their computer. That's it for question number 8. Take a screenshot. Question number 9. What is ISDN? So, सबसे पहले आपने हेडिंग डाल लेनी है ISDN. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. Its maximum communication speed is 128 kilobits per second. It costs more than dial-up service.
It can simultaneously transmit both voice and data. It allows multiple devices to share a single line. It requires that the user has ISDN digital telephone service from telephone company and uses a faster modem than dial-up modem. And that's it for question number 9. Take a screenshot. Question number 10. What is CDMA technology? सबसे पहले आपने हेडिंग डाल लेनी है CDMA technology. CDMA stands for Code Division Multiple Access. It is a wireless cellular communication technology. Its transmission speed can be up to several Mbps. It can provide service to many people at the same time. It allows sharing of short text, voice, data, or video messages. That's it for question number 10. अब हमारे तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चंस. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेटवर्क्स. सो इसके आंसर के लिए आप आ जाइए बुक के पेज नंबर 141 एंड 142 के ऊपर. पेज नंबर 141 के ऊपर जो आपको हेडिंग नजर आ रही है, यूजेस ऑफ नेटवर्क्स. यहाँ पर आपने हेडिंग डाल लेनी है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स. यूजेस और एडवांटेजेस सेम है. इसके अंदर आपने ये हेडिंग लिख लेनी है हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, और फिर पेज नंबर 142 के ऊपर फाइल शेयरिंग और इंटरनेट शेयरिंग. इस सब की एक्सप्लेनेशन. टेक अ स्क्रीनशॉट. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब क्लाइंट सर्वर इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स. और इसका आंसर आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 143 और 144 के ऊपर. पेज नंबर 143 के ऊपर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है. फिर आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है पेज नंबर 144 के ऊपर. फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड. तो इसका आंसर आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 145 से 147 तक. पेज नंबर 145 के ऊपर आ जाइए. टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया. फिर आप लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में लिख लेंगे. फिर पेज 146 पर लोकल एरिया नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. वाइड एरिया नेटवर्क, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. और पेज नंबर 147 के ऊपर पर्सनल एरिया नेटवर्क भी लिख लेंगे. दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. तो इसका आंसर आपको मिलेगा बुक के 149 से लेकर पेज नंबर 151 तक. पेज नंबर 149 के ऊपर आ जाइए. टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. सबसे पहले बस टोपोलॉजी, फिर उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस. सेकेंड वन रिंग टोपोलॉजी, फिर उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिख लेंगे. थर्ड वन स्टार टोपोलॉजी, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस. और फोर्थ वन मेश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिखेंगे अप टिल पेज नंबर 151. दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. Write a note on dial-up and DSL internet connections. इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 151 के ऊपर. डायल-अप लाइन और DSL कनेक्शन. That's it for the exercise of chapter number 5. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है then thumbs up and press the like button. Thank you. Allah Hafiz.